Namaste and welcome to this exciting episode of Sattology Debunking Mythology. Sattology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. So I have very special guest today. आप सबका इस सत्योलॉजी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सत्योलॉजी मतलब कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। उसके विपरीत है मिथोलॉजी, विच मीन जो मिथ, जो कि झूठ, नकली और काल्पनिक, उसकी पढ़ाई और उसका विज्ञान। आज स्पेशल गेस्ट भी है हमारे पास और देश कपूर जी, और हम लोग उनके साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ा कुड़े देंगे कि कहाँ पे पश्चिम देश अटके हुए, क्या भारत से जुड़ते हैं। अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप उसको सुनेंगे और मुझे उसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लेट अस नो फीडबैक। और दिसंबर 31 आ रहा है और मेरा और आप सब जुड़िए सत्योलॉजी रेवोल्यूशन के साथ 2024 में। सो लेट अस वेलकम श्री देश कपूर जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और दर्शकों को बोल दूं, देश कपूर जी दृष्टिकोण चलाते हैं। दृष्टिकोण तो आपको तो एक हम देख भी चुके थे, त्रिकोणम इति, मतलब भारत से ही कोण सारे भारत में कैलकुलेट होते हैं। तो ये दृष्टिकोण है, इनका दर्शन है वर्ल्ड व्यू पे। सो देश कपूर जी, पहले तो ये बताइए कि ये दुनिया में चल क्या रहा है, बिकॉज इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बाय द डे। ये और ऐसा नहीं लगता कि इतिहास में पहले कभी ऐसी सिचुएशन ना रही हो, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था। इस तरह की सिचुएशंस बार बार आती रहती है और उसको लोग सॉल्व करते हैं। और हमारे जैसे लोग, जो कि ऐसा लगता है हमको कि हम लोग को सब कुछ दिखता है, लेकिन हम लोग इस पे बड़े परेशान भी होते हैं और लोगों को बताने की कोशिश भी करते हैं ऐसा हमको दिखता है, ताकि लोग उसके लिए तैयार रहे। दैट इज द होल पर्पस ऑफ एनालिसिस। आपको एक मदद मिल जाए कि आप यू कैन बी रेडी फॉर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड। और आजकल जियो पॉलिटिक्स इज द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट ऑल्सो। क्या चल रहा है, एज लॉन्ग एज यू आर सेफ, ये कंडीशन लगा दो, एज लॉन्ग एज यू आर सेफ इज द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट। तो देश कपूर जी, पहले बताइए कि ये जो जयशंकर जी की जो रशिया विजिट हुई थी, इसके में बहुत सारे शोज में हर जगह लोग बात कर चुके हैं। व्हाट इज योर व्यू कि व्हाट वाज, हाउ डिड दिस कम अबाउट? So I think, see, one thing is कि जिसको like US एक खास दोस्त मानता है और या जिसको वो कंट्रोल कर सकता है, उसको बचाने के लिए वो कुछ भी करता है, और या उसको संभालने के लिए वो कुछ भी करता है। It won't go against that country or against that establishment. In fact, 100 खून माफ होते हैं। हमने पहले भी बात की है और हम जानते भी हैं कि हाउ पाकिस्तान was given the entire nuclear secrets and plant and everything else, at the, like, even at the cost of putting CIA and the customs, the US customs, down by the State Department. So वो and then like later on अफगानिस्तान के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं दिया उनको। तो इसलिए as far as India's relationship is concerned, India, और ये जो पूरा था, जैसे वो अभी रिपोर्ट भी आई है कि दोवल जो है उन्होंने कहा है, जो NSA है उनको, कि आपने लाइक US को कहा है कि आप ये जो आप पन्नू को इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि वो आपका एक CIA एसेट है। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। एंड ऑन द अदर साइड, like US is hell bent on cornering India in that whole situation. The idea is that even though they say India is their preferred or very close ally, it is not. And it is not as long as, in my personal view, as long as Modi is there. As long as Modi ji hai, wo, it is always like going to see India as an adversarial ally where the establishment does not really like work according to their wishes. So now that is like something I think we have established. So एक बात तो इंडिया को क्लियर हो गई है, खास तौर पे ये वाली एस्टैब्लिशमेंट को,
कि अगर हमने इंडिया को आगे लेके जाना है और इसको बचाना है तो हमें और फ्रंट्स पे और फ्लैंक्स पे हमें काम करना पड़ेगा, और बहुत सारे फ्लैंक्स अभी खुले हैं और खुलेंगे। तो इसलिए द रीजन वाई इंडिया, और जयशंकर जी ने बार बार ये बात कही है कि ऑफ ऑल द रिलेशनशिप्स दैट इंडिया हैज हैड, रशियन रिलेशनशिप इज द मोस्ट significant and the most steadiest, like steady relationship for the last 70 years. Now, like in a way, it is true. In a way, it is not, because after all, like रशिया ने हमें बचाया जरूर है, हमेशा वीटो करके और वो सब करके। बट ये भी सच है कि अगर हम मित्रोखिन आर्काइव्स पढ़ें और बाकी और हम न्यूज देखें, तो रशिया हैज डन अ लॉट ऑफ सबवर्जन, a lot of interference within this country, like within India, in our polity, in the various ways जिस तरह उन्होंने कम्युनिस्ट को आगे बढ़ाया। जो जयशंकर जी वहां गए हैं लाइक रशिया, and he has gone to, and he was saying that the Russia relationship actually is extremely steady and one of the most significant relationships that India has had, and that is very very true, because throughout our history, Russia has always helped us with different intelligence inputs, as well as with the vetoes that we required, when US and Pakistan were working together. Having said that, it is also like very clear, ये भी एक सच्चाई है कि रशिया हैड इन्फिल्ट्रेटेड इंडिया इन अ वेरी डीप मैनर, एंड हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनके पेरोल पे थे, एंड दे यूज्ड टू इंटरवीन इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे। इनफैक्ट मैं अपनी बुक का रिसर्च कर रहा हूँ, जो मैं बुक लिख रहा हूँ, and one of the things I found was, like, I know a lot of lot of different people have written, and commentators have written about the naval mutiny, which was the real reason why India got independent. I have written about that as well. General G.D. Bakshi ने a book likhi hai. I know like other people have also written. One of the things that I learned during my research was, and one of the things that happened was, although it was the main reason जिससे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, बट ये भी सच है कि उस पूरे नेवल म्यूटिनी को बैकअप करने के लिए एक्चुअली कम्युनिस्ट थे. That is the real reason why Sardar Patel was actually not in favor of backing it up, although which surprised me like a lot. But that was the real reason. उस समय जो था कम्युनिस्ट का जो रियल रोल था वो बेसिकली रशिया के थ्रू आता था. So that was a fear that even Sardar Patel and other leaders had at that time during partition. And वो धीरे धीरे like India became like kind of like a playground for the West and Russia, in a big way. But Russia at least was more sincere, because like it was treating us like it's like younger brother or like something like that, but पर कंट्रोल में रहने का. तो उस तरह से वो हमेशा रखता था. और वो हमने सबने सुना है यूरिबिज्म ऑफ के जो वो हैं जो वीडियोस हैं, एंड हाउ प्रोपेगेंडा यूज्ड टू बी डन विद इन इंडिया. So Russian relationship is very important, but India cannot fully align with Russia because it has its own designs also. Now ये जो वहां जब गए हैं उनके पास, तो एक तरह से एक हेज करने वाली बात है, पर ये भी है कि like one of the very interesting things that he said was कि US India, US China, Russia China, and Russia US relationships have not been that steady because they have had their ups and downs. I think he was also pointing to, in a way, about Russia and China relationship. Now, पिछला साल जब
हमारा जो 2022 जब खत्म हुआ था, तब उस समय यूएस ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था अगेंस्ट द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑफ चाइना. बाय दिस ईयर they have actually had some kind of rapprochement, right? वो आपस में मिलके काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम. तभी शी जिनपिंग वहां गया. ऑफ कोर्स जो उसको चाहिए था वो सब कुछ नहीं मिला उसको, बट ऐसा भी नहीं है कि वो उन्होंने बिल्कुल नाता तोड़ दिया है और बिल्कुल खत्म कर रहे हैं हर चीज को. द सो what I'm trying to say is कि even Russia is a bit wary about China now after Xi Jinping's visit. Like in my understanding of things. Now it may be कि मैं आपको इधर ही थोड़ा सा ऐड कर दूं, क्योंकि अंकित शाह जी ने अदर लोग काफी लोगों ने बोला है, एंड आई कोट अंकित शाह जी आल्सो. पूरा विजिट जो हुआ टू द शी जिनपिंग का जो विजिट हुआ था वो हुआ था ताइवान के ऊपर. और वही बात सच में बाहर आई है बाकी काफी न्यूज आइटम से भी, कि वो ये बताने गया था कि ताइवान पे हम आक्रमण करेंगे और आप वहां पे इंटरव्यू मत करना. दिस व्हाट द होल कन्वर्सेशन वाज. दैट्स व्हाई द विजिट वाज रैप्ड अप क्विकली. और ये भी अभी इस पे आई नीड योर इनपुट्स आल्सो कि चाइना और अमेरिका का फ्यूचर इज इंटरट्वाइंड सिंस 1970s. अभी दोनों एक साथ ही नीचे जाएंगे और एक साथ ही ऊपर रहेंगे, दोनों का एक ही साथ होगा. लेकिन जो भी अमेरिकन पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो सच बता रहे हैं अमेरिकन को, हम सबको सच बता रहे हैं, ऐसा हमको मुझे नहीं लगता ऐसा. These are the different viewpoints are there actually. So what do you want to say on that, please? See, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है, बट लाइक आई जस्ट से माय व्यू पॉइंट, राइट. एंड मेरे हिसाब से लाइक ये बात बिल्कुल सच है कि सी लाइक ये बात सच है कि चाइना और यूएस आर वेरी स्ट्रांगली इंटरट्वाइंड. वो बात तो हम सब जानते हैं. इनफैक्ट मैं बहुत साल पहले आई यूज्ड टू से टू माय फ्रेंड्स के almost 30% of my household grocery is actually paid for by the CCP China. क्योंकि वो सब्सिडाइज करती हैं अपनी इंडस्ट्री को, और वो जो सब्सिडीज जो देती हैं अपनी इंडस्ट्री को, उससे हमारे यहाँ पर जो चीजें आती हैं वो सस्ती आती हैं, इसलिए मेरा ग्रोसरी बिल कम हो जाता है. नाउ this entire relationship is so strong that if tomorrow US throws China out and all its products out, first of all यहाँ products होंगे नहीं. Second, अगर हो भी जाए वो इतने expensive होंगे कि यहाँ की middle class पूरी मिट जाएगी, bankrupt हो जाएगी, because already inflation has gone high when they are trying to actually break some of the relationship, and the supply chain costs have increased the last 1 year. So container costs, the other supply chain, labor shortages, all the other things have added to the supply chain costs. So जो relationship है वो बहुत strongly intertwined है, उसको like उखाड़ पाना बहुत मुश्किल है. क्वेश्चन ये नहीं है कि ये इंटरट्वाइंड है या नहीं. मेरी नजर में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इंटरट्वाइंड हुई क्यों. See, the thing is, ऐसा क्या उनको दिखाई नहीं देता था. I mean, I know Peter Navarro जो हैं, who was the China hawk in Trump's establishment. He had written an article for Dristikon way back. I think in 2010 के आसपास की बात है या 12 की बात है. He had written an article about the 8 wars of China. He had written a book at that time. He was a professor at that time. He had written that book. If Peter Navarro knew, everybody would have known that China is fighting this war on 8 different fronts with US, and it is not going to be easy for like US to sustain itself, because it is actually creating a lot of risk for almost everything within its economy. So why did they still go on? So I think that is important to understand, because मेरी नजर में एक तो यहाँ का जो
जो पॉलिटी है वो धीरे धीरे गिरती गई, बिकॉज इट वॉज ईजी टू लॉबी एंड बाय एनीवन दे वांटेड. But more importantly, I think there was some kind of a relationship that the US was building with China from Kissinger's time onwards. You know, जब किसिंजर पाकिस्तान के बात करने में वहाँ चाइना गया था. So they thought if they have that kind of an ally within Asia, they can keep Russia at bay all the time. Now, over time, not only did China became their close ally, but in the last few years, because of all the negativity that has come through US to China, China is hedging its bets with like Russia. उसकी रिलेशनशिप है, बट मेरी नजर में उसकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है लाइक रशिया के साथ जितनी उसकी यूएस के साथ है. बिकॉज सी इट डजंट मेक एनी सेंस. मतलब यूएस का मोजो यही है कि वो कंट्रोल करते हैं यू नो अपने पार्टनर्स को, दूसरी कंट्रीज को, दूसरे पावर्स को. लाइक इंडिया इज नॉट एट that stage where China is now, but India is definitely at that stage where China was 20 years back. So 20 years back, if US could ally with China in that kind of a fashion, why is it trying to like play down or downplay the relationship with India or the significance and prominence of India? So I think those are important questions. और like इसका जवाब मेरे पास कोई 100% है नहीं, quite honestly. मैं सिर्फ like मेरा जो काम है, मैं जब देखता हूँ किसी चीज को, मैं उसके फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछता हूँ खुद से. तो इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहा है कि वो तो मेरे को भी समझ में आता है कि इंटरट्वाइन है और अलग नहीं हो सकते, हुए तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे. पर ऐसा हुआ क्यों, इस स्टेज पे आई क्यों? आई हैड गॉन टू 2018 की बात है, 2017 की, जब मैं मिलवॉकी में एक प्रोजेक्ट करने के लिए गया था. सो आई वाज एट so I'd gone to this company, FMCG company. I won't name that company, but like it is like between Milwaukee and Chicago. उसके like वहाँ headquarter है. It is one of the largest FMCG companies within the US. Now उसकी बिल्डिंग, उसका जो कैंपस है उसमें 8 या 9 बिल्डिंग्स थी. उसमें सिर्फ 2 में लोग थे, बाकी सब बंद थी. They had been closed for many years now. उसके बाहर निकलो, वहां पर लेक मिशिगन है. लेक मिशिगन के आसपास जितने घर थे सारे $1 million घर होने चाहिए, बट दे वर ऑल बोर्डेड. उनकी घास करीब 3-4 फुट की थी. उसके आसपास के सारे स्टोर सब बंद थे, रेस्टोरेंट सिवाय पेडे लोन के. और बिटवीन शिकागो एंड मिलवॉकी you really have really nothing going on. It is almost like an economic war zone. That is when I first understood why people here in America had voted for Trump so overwhelmingly. Because उन्होंने पूरा मैन्युफैक्चरिंग ही उठा के मिडवेस्ट से पूरा खत्म कर दिया. Who destroys his own country for the benefit of another? Either they were actually, so that is what has been puzzling me ever since. Either they were paid to do that, but the entire establishment can't be paid to do that. They did that, in my view now, to actually tie China up so closely with US that like it can dictate a lot of things with China, even though China really feels like really shows कि it is trying to be belligerent against US. थोड़ा तो वो है ही है. And I'm sure कि after the coming in of Hu Jintao and going away of Hu Jintao के जाने से और शी जिनपिंग के आने से कोई ना कोई चेंज तो आया ही है. But again, Xi Jinping cannot change the ground realities of the entire relationship. So in that sense, I've been trying to understand where in this जो intertwining जो हुई है जो इनके economies की,
वो कितना जानबूझ के था, कितना एक स्ट्रेटजी थी और कितना एक सबवर्जन था यूएस का। मेरे ख्याल मैं नहीं मानता ये बात कि यूएस इतनी बुरी तरह से सबवर्ट हो जाएगा विद द होल एस्टैब्लिशमेंट बीइंग देयर कि वो अपना अपना देश ही बर्बाद करके रख ले। और अगर देखो तो पूरा मिडवेस्ट तो ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। अच्छा, एक तो एक हाँ, एक एक ब्रेकिंग न्यूज है। हुथी रेबल्स ने जो है दे हैव अनाउंस्ड कि अमेरिका इज स्टॉपिंग द शिप्स व्हिच आर इज नॉन इजरायली फ्लैग शिप्स आल्सो राइट नाउ। इट इज नॉट देम। ये उनका न्यूज है, अभी एक फ्लैश हुआ है। एंड ऑल्सो अभी उसका कंफर्मेशन आ जाएगा एक दो दिन में, लेकिन दिस इज व्हाट दे हैव फ्लैश राइट नाउ। और दूसरा है कि वाई अगर उसको चाइना से प्रॉब्लम्स रहती हैं अमेरिका को, मींस प्रॉब्लम इंटरट्वाइंड है, व्हाई इट इज मेड द बोगी मैन विद इन यूएसए। I don't understand that. Why people say China is the number one problem? That to GOP is also saying Democrats are not saying it. Why do you think so? हाँ, सो जीओपी जो जो कैंडिडेट्स हैं, the people who actually say that are the people who are challenging the established deep state here or the managerial class here. Trump did that, but I haven't really seen Nikki Haley or other people like be so strong against China all the time. Yes, they say a lot of things, but like I don't think they are in that kind of stage where Trump was. ट्रम्प का तो एक बहुत क्लियर था फंडा कि बस चाइना को उखाड़ के फेंकना है। बट बाइडेन का जब आया था स्टार्टिंग में, मुझे याद है कि उस समय जब इंडो पैसिफिक का हुआ था, जब मीट्स हो रही थी और जब उसके बारे में पूछा गया था, तो एक्चुअली जो पहले उसका फ्रेज रखा था वो था फ्री एंड free and independent, something like that. Indo-Pacific, free and prosperous in like Indo-Pacific or something like that. But he changed that phrase, and he changed that phrase in a way that he would let China off. Later on, there was a lot of pressure that was built on him by Japan as well as Australia and India, and then they came and changed his phrase again. So initially he tried to kind of see how he could work with China, but later on I think it paid with a lot of crowd to target China or to blame China, because especially in the like most of the like if you take out the coast, like middle का जो US है अगर उसको देखें, so it pays to blame China. But quite honestly, I don't, except for that semiconductor का जो था, I don't think he has like really taken the measures that he should have taken against China. If China was really the adversary that he and other people say that they are, China is. क्योंकि जो स्पाई बलून है, यहाँ तो एक टेररिस्ट को मारने की बात हो रही थी, वो भी एलिज्ड है कि वो मरा भी नहीं। यहाँ तो स्पाई बलून का पूरा देश स्कैन करके चला गया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये देखते चले गए। और so like it is, in my view, the spy balloon going across US was not very different from, say, a 9/11 attack, except that nobody died. Like it was that big security breach, of this country, and it kept on happening for so many days. Despite that, there was no retaliation. There was no pushback. The only pushback that happened was the conductor industry का, क्योंकि वो तो दिखाना ही था. But in that sense, I would say कि wording एक चीज है और कृति दूसरी चीज है. I don't know ये कितना, क्योंकि मैं अभी भी वहां फंसा हुआ हूँ.
मैं अभी भी इसी बात पर फंसा हूँ कि आखिर इतना जो इंटरट्वाइनिंग की वो की क्यों, कोई ना कोई रीजन तो होगा, और वो रीजन मेरे नजर में यही है कि उन्होंने अपना लाइक एक एक्सिस बनाया है चाइना के साथ। नाउ शी जिनपिंग जब आया उसने कोशिश की कि वो हटे, जो वो हु जिनताओ और माओ का की विरासत थी, बट वो इतना ज्यादा नहीं हट पाया बिकॉज इमीडिएटली उसके पूरे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स शुरू हुई। यू नो बैंक्स बंद हो रहे हैं, यू नो एवरग्रांड एंड जो रियल एस्टेट उसका बाजा बज रहा है, मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग अब बाहर जा रही है, यू नो जो कंपनीज हैं, बिकॉज दे आर सीइंग द रिस्क्स like that are there because of the rest of the economy coming down. So obviously China is trying to build it back, because अगर नहीं हुआ तो वो शी जिनपिंग का कुछ रहेगा ही नहीं बचाने के लिए उसको, तो वो प्रेसिडेंट बन के और कंट्रोल करके भी क्या करेगा। तो उस नजर से अगर मैं लाइक देखूं तो आई थिंक इन माय व्यू द like when Xi Jinping did come to US, yes, he must have talked about Taiwan, because like that is the surest way for China, for Xi Jinping to establish its strength like within China, because जब कुछ ना हो, वो इकोनॉमी का बाजा बज रहा हो, और अपने अंदर ही बहुत सारे लोग हों जो तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी लाइक अच्छी नहीं कर रही, और लाइक तुम्हारे पास एक ही चारा रहता है कि आप कोई वॉर शुरू कर दो। तो ताइवान की वॉर इज द वॉर दैट विल हेल्प चाइना और विल हेल्प शी जिनपिंग। मे बी दैट इज व्हाट ही मस्ट हैव। सॉरी, उसकी तो हालत खराब है, बहुत खराब है शी जिनपिंग की। हाँ, उसकी हालत काफी खराब है, तो वो कोशिश करेगा वॉर की, बट मैं ये सोचता हूँ कि उसने ताइवान के बारे में बात जरूर की होगी, बट आई थिंक इट वाज अ फार डीपर कॉन्वर्सेशन देन जस्ट ताइवान। अगर ताइवान के बारे में बात करनी होती तो सी लाइक ऐसा नहीं है कि वो आया उसने सडनली कुछ भी बात कर ली। उससे पहले बहुत सारे लोग वहां गए थे, जो ये defense secretary of state and all those people had gone there, and like they must have made an agenda. They must have done all the groundwork before Xi Jinping ever landed in the US. So उसने ऐसे आके कुछ भी नहीं बोल दिया, like उससे पहले बहुत सारी और चीजों के बारे में बात हुई होगी। तो सिर्फ एक now Taiwan doesn't help the US at all. Why the heck would US go all the way? In fact, Taiwan का entire situation actually hurts US quite a lot, because वो semiconductor जो इनको मिलना है अभी, उसका सोर्स ही खत्म हो रहा है। So like अगर ताइवान को उसने एनेक्स कर लिया, so why would US agree to such a meeting, like such a entire like coming of Xi Jinping for his benefit? Like why not the US benefit? तो US benefit उसमें क्या था कि उसको बुलाया और सारा सैन फ्रांसिस्को साफ भी कर दिया, और वो सारा बैड ब्लड भी कमाया खुद के लिए, बिकॉज कैलिफोर्निया में अगर तुम ये काम कर रहे हो, दैट मीन्स दैट इज योर द स्टेट फॉर डेमोक्रेट्स, एंड दैट्स वेयर like you are trying to do all those things for China. Really? So why would you do that? Because you had something like much bigger like in that whole situation than China had. वरना चाइना आया, वो शी जिनपिंग आए, भाई साहब उन्होंने कहा जी हम तो ताइवान पे हम अटैक करने जा रहे हैं, और उसने यूएस ने बोला हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता। मेरे को ये चीज हजम नहीं होगी पूरी तरह से, तो इसलिए मैं ये मानूंगा कि आई थिंक देयर वाज समथिंग फार डीपर दैट like there was like I don't know what it is, but it has to be like much more deeper. And I think when he came here, that is when like Russia also started changing a little bit. And ये जयशंकर का वहां जाना is to actually like is a realization for both India from the US side and Russia from the China side that things are a little different from what they had thought it were. नहीं, शी जिनपिंग को लगा होगा कि वो
अमेरिका से थोड़ा सा उसको बेनिफिट मिलेगा, और बाइडेन ने बोला होगा भाई हम दोनों साथ में नीचे जा रहे हैं, ऐसा होगा कुछ, बिकॉज यही होगा, बिकॉज अदरवाइज कोई आने का जरूरत नहीं था। और और इंडियन नेवी ने भी वहां पे धाकड़ जमा दिया, फिलीपींस नेवी के साथ जाके एक्सरसाइज कर लिया, एंड विच इज ऑल्सो इरिटेटेड देम। अच्छा, कमिंग टू दिस साइड, जो जो मेन पॉइंट है कि माइग्रेशन क्राइसिस जो चल रहा है, यूरोप में है, अमेरिका में है, सदर्न बॉर्डर। मैं तो सैन डिएगो में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो हर हफ्ते 8,000 लोग पकड़े जाते हैं, और उसमें से 8,000 लोग छोड़ भी दिए जाते हैं उसी वक्त। तो दे आर हियर राइट नाउ हियर, मतलब यहाँ पे 2 मील के दूरी पे इनका कैंप बन गया है, जबकि इस एरिया में कैंप कोई बना नहीं सकता। इस एरिया में यहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, बिकॉज द रिच पीपल ऑफ सैन डिएगो ऑल इसी एरिया में है। तो फिर भी लाइक दो कैंप बन गया इधर, और सारे के सारे जो हमारे जो गोरे जो भी सेटलर कम्युनिटीज हैं, सेटलर डिसेंडेंट्स हैं, वो सब लोग दे आर गोइंग एंड हेल्पिंग देम, उनको फूड पहुंचा रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, एंड दिस इज दे आर डूइंग टू पीपल हु हैव कम इलीगली। और रिपब्लिकन चाहे जितना भी उछल ले, कुछ भी कर रहे, बट दे आर डूइंग दिस। तो क्या इट इज बाय डिजाइन? क्या अमेरिका अपना डिजाइन से नीचे जा रहा है? लाइक वो इट इज देयर प्लान टू कोलैप्स इकोनॉमी? मुझे समझ, और रिपब्लिकन कोई अपोजिशन भी नहीं है, कोई कोई रिपब्लिकन तो सारे ऐसा लगता है कि जैसे ही कांग्रेस में पहुंचते हैं सब बोलते हैं हम एक साथ ही हैं। तो आई डोंट नो वेदर इट्स ए बाय डिजाइन और नॉट। See, इसमें like I can't believe के like this is so innocuously happening and happening on its own, and despite the fact के इतने सारे illegal लोग, मतलब अगर हमें याद है कि जब हमने अपना H1 और ग्रीन कार्ड और वो सब किया था, तो कितना हमने पापड़ बेले थे to go to the legal side. Anyone who comes even for the tourist visa knows all that like discussion or the the process that goes on, right? So how is it that they are allowing? I mean, ठीक है, वो amnesty देके डेमोक्रेट्स अपने लिए एक बनाते हैं, sanctuaries बना लेते हैं, sanctuary cities से they start like getting more votes and win elections. I think that's what they have been trying to do until now. But and we also know that Democrats and the intelligence agencies are working together to ensure that Democrats are the one which they keep on winning. Now, why would they keep on doing that and subvert the entire country itself? And I think ये जो है like इसका ये conspiracy theory की तरह है, but basically I think they are like US is the strongest country, like it is the biggest country in many ways, and they do want to control the world, like the deep state का जो basic जो aim जो माना जाता है, they want they know that if they can bring in populations which are not going to be very educated, because so just think about it. I mean, like forget about the racial or racism aspect of it. Like put that aside and just look at it in a very ruthless and objective way. The white population here and then the Asian population here are two of the most educated and highest earning populations in this country. The rest of the groups are nowhere near these two groups, the Asians and the whites. So if you are putting whites or Asians down and putting up the other ones who come illegally, then not only are you ensuring that tomorrow's generation that comes overwhelmingly is less educated, less earning, and also less like innovative, because the future of this country will be at stake. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो एशियंस जो यहाँ आए हैं, whether it is the Chinese or Indians, they in their country are not doing what they would do here. Now they have been doing. So
यहाँ अगर तुम उनको नीचे रखोगे और दूसरी को ऊपर रखोगे, पर नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आएगी वो उतनी इनोवेटिव, उतनी प्रोडक्टिव और उतनी अर्निंग वाली नहीं रहेगी. एंड दिस इज exactly what is happening in Europe as well. Europe may also the infiltration from the Islamic countries are overwhelmingly less educated, less earning, less productive. उनके jobs menial jobs होते हैं, उनके जो incomes हैं they are far lower. So आगे का जो innovation है वो west में नहीं होने वाला, because the demographic trend is going to change. And like maybe like one of the things, you know, if I go by the conspiracy theories, or if I go with the theories that the deep state is trying to control, then maybe in the short run or the medium run, it is easier to wield the resources of this country, you know, all the West, to actually take over as much as possible of the other, the other nations. And in that, the two nations, China, though, I think in more ways than one, they have kind of like, I won't say taken over, because that's not the right term for it. Like in many way hooked, like with like themselves. अगर हम गए तो आप भी जाओगे नीचे सनम types वो वाला scene है. But like Russia and India are two countries which are still very independent of all this and are capable of destroying their designs completely. So I think, you know. आप कुछ बोल रहे थे, कंप्लीट करिए उसको पहले. हाँ बस तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि I think like in the next around 20-25 years, I feel that West is going to be the petri dish or the the laboratory where they will fine tune their strategy of control, so that like they can increase it further. Now again, it sounds like a very conspiratorial kind of a thing, but like I see no other option, like no other answer or argument to this whole thing, because it just doesn't make any sense. कंट्रोल फ्रीक्स हैं वो हर चीज में कंट्रोल फ्रीक्स हैं. यू एंड आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आल्सो कि किस तरह कंट्रोल फ्रीक होते हैं और पैनिक में हमेशा काम करते हैं. हमेशा हर चीज इमरजेंसी होता है. एवरीथिंग इज हैंड टू माउथ. यू हैव सीन द प्रोजेक्ट्स एवरीवेयर द बजट गेट्स कट. मतलब हर चीज एकदम लिमिट पे चलता है, एक्सट्रीम पे. देयर इज नो मार्जिन ऑफ एरर एनीवेयर. उसी पे पूरा इनका चलता है एंड दैट्स व्हाई दे थिंक दे आर मेकिंग मनी. मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है एंड आई एम नॉट, ये मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है नहीं. मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि गिवन कि अभी उनको चाइना से गुड्स महंगे पड़ सकते हैं, दूसरे उनसे महंगे पड़ सकते हैं, तो ये सारी पॉपुलेशन पहले से बाय डिजाइन लेकर आ रहे हैं ताकि चीप लेबर मार्केट में अवेलेबल हो, तो कीप द कॉस्ट डाउन. तो ये भी हो सकता है कि मिनिमम वेज माइट बी रिड्यूस्ड ग्लोबली. नेशनल अभी जो इंक्रीज किया था उसको रिड्यूस करेंगे वापस, बिकॉज दे हैव टू प्रोड्यूस गुड्स एट होम. कोई बेचेगा नहीं इनको. तो आई थिंक जो डी-डॉलराइजेशन का जो इफेक्ट है उसकी वो नेगेट करने के लिए भी कर सकते हैं. और दूसरा ये भी है कि अभी एशिया इनके आउट ऑफ बाउंड जा रहा है. सोच रहे थे कि इजराइल के थ्रू, मुझे ऐसा लगता है एंड आई मे बी टोटली रॉन्ग, बिकॉज इंडिया इज स्टिल, दे आर स्टिल अ मिलिट्री सुपर पावर. आई डोंट नो इकोनॉमिक, बट मिलिट्री सुपर पावर तो अभी भी है. एंड banking situation is very bad. American banks are collapsing. So economic fundamentals are not clear मेरे हिसाब से. So now अगर ये सब situation देखते हुए why so many create conflicts, को withdraw क्यों नहीं कर रहे कहीं से भी? I don't understand that. और कहीं लड़ भी नहीं रहे हैं, by the way. कहीं लड़ भी नहीं रहे हैं, withdraw भी नहीं कर रहे हैं. So और उसके ऊपर से $886 billion का डिफेंस बजट पास किया है. उसमें से सैलरी कंपोनेंट 50% है, तो $400 billion इज फॉर कैपिटल एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट्स इन प्रोजेक्ट, डीओडी प्रोजेक्ट्स. तो आई डू नॉट नो कि इज दिस द लास्ट बजट दिस बिग और नेक्स्ट बजट विल बी टोटली कट डाउन. जो भी नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा उसको बोलेंगे कि आप 25% कट करो. सो आई डू नॉट नो वेयर दिस थिंग इज हेडिंग according to you. I don't think the budget is ever going to be cut now going forward. I think like budget will remain growing, because that's the only direction it can go now. Because see, the thing is, इन्होंने जितने conflicts शुरू कर दिए हैं, now all these conflicts need to be paid for.
they are paid for by the taxpayers, and they are increasing. See, उसका एक multiplier effect होता है on the other cost, because it's not just like one company or group that is has to be paid, but a lot of other paraphernalia that goes on. There are NGOs which need to be created to manage the communication around it. There are think tanks. There's a whole like amount of investment that goes into it. NED का budget जो है वो समय almost $100 billion का है. NED is National Endowment for Democracy. Now, like that is a front for whatever CIA does, and like it actually intervenes or does subversion from by investing in 4 different groups. One is the Democrats and Republicans, so that they can both be managed, and then the businesses as the business group as well as the labor groups, so they can infiltrate in both the areas in different this thing. So उसका भी budget increase हो रहा है. So धीरे धीरे like it's not just the war that US is paying for, but management of the war that US is also paying for. So ये budget, और मैं कहीं देख रहा था कि they are saying the budget for NED has, irrespective of how the this entire like economy goes, will keep on rising by 8 to 9% every year. So that that forecast is already there. Now, if like that is, and US economy is not growing at 8 to 9%, but that budget will keep on growing at 8 to 9%. So if that is the direction that we are going, then I don't see the the budget or the debt decreasing at any time soon. The dollarization का जो attempt जो हो रहा है हर जगह पे, now that will also have an impact going forward, like which will be very negative for at least the US and the US economy हमारे लिए. So so इसलिए अगर उस तरह से देखें अगर like US की economy को, तो I don't understand how it will like survive going forward if like Russia and India do not back down, because if they keep on pushing the direction that they are pushing and the global south goes along with them, then I think we have a very strong chance that US will trip on its own. And I think whatever their calculations are of the future in terms of how they want to control the entire world, they will at some point have to, like I see this more as a Ponzi scheme. At some point they'll have to pay up. अब मेरी नजर में ना 2 तरह की लीडरशिप्स होती हैं और 2 तरह की वॉर्स होती हैं. लीडरशिप्स वो होती हैं 2 डिफरेंट. एक तो वो जो अपनी पावर के लिए देखती हैं कि मेरी पावर जो है वो कितनी स्ट्रांग है, और दूसरी देखती हैं कि मेरी नेशन की पावर कितनी स्ट्रांग है. दोनों के व्यू पॉइंट और दोनों के डिसीजंस पे भी बहुत फर्क होता है. नाउ रशिया जो है, that is a very nationalistic kind of a leadership that looks at the nation's strength. India की leadership before 2014 was like this, like it used to look at its own power. After 2014, it has changed. Now it looks at the nation's power. So there is a difference of how the decisions are being taken, how the economy is moving, how the allies are made, how the relationships are built. They are very different. Now, ये जो है like US के अंदर कुछ साल पहले तक ये था कि कुछ साल पहले in the sense के I would say
लाइक निक्सन से थोड़ा पहले, लाइक निक्सन के आसपास, इवन रोनाल्ड रेगन के टाइम में, आई थिंक आफ्टर निक्सन, इवन रोनाल्ड रेगन के टाइम में, आई थिंक like I would still believe that US was looking at its own like nation strength. Somewhere after that, it just went haywire. Especially George Bush Senior, like when he tried to do whatever he wanted to do in Iraq and all that. There they were looking for their own benefit rather than the country's benefit. So so उनके decisions बहुत different होते हैं, इसलिए Xi Jinping के decisions, when the reality has settled in his mind of what happened in the last few years, like that decisions will change, because वो भी खुद की पावर देख रहा है. अब तक वो शायद पूरी तरह से खुद की पावर इतनी नहीं देख रहा था पहले जब उसके स्टार्टिंग के ईयर्स से. But after he's tried to consolidate his powers, he's only looking for his own good rather than nation's good. So और दूसरी जो वॉर्स होती हैं वो भी ऐसी होती हैं, फॉर प्रॉफिट होती हैं या फॉर देयर ओन कंट्री सेक होती हैं, तो दोनों में बहुत फर्क होता है. एंड अगर हम इस तरह से देखें तो अगर मैं in the last few years, US has been in that kind of a framework where they have been looking at the decisions, the wars, more from their own perspective. कि हम कितने स्ट्रांग बनते हैं, हमारा ग्रुप है जो एलीट ग्रुप है वो कितना स्ट्रांग बनता है, वो पूरी नेशन को नहीं देख रहे. वो दे आर नॉट लुकिंग एट द लास्ट माइल, दे आर नॉट लुकिंग एट द पुअरेस्ट पर्सन इन like in this country or the poorest citizen of this country. They are more bothered about कि हम कितना कमा सकते हैं इसमें. तो अगर वो लेकर चले तो then after some point for them even America's boundaries may not make much of a sense. So वो जो आप कह रहे हैं ना इतने सारे infiltrate कर रहे हैं, like I think they are playing a different game and I can't put my finger to it. मैं झूठ ही बोलूंगा अगर मैं बोलूंगा हाँ मेरे को पता है एग्जैक्टली वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है समझना. नहीं एक्चुअली क्या है कि वो एक सेटलर माइंडसेट है, ये देश उनका नहीं है. इनको ये देश उनको मिल गया, और अगर इतना ही दिमाग होता तो यूरोप भी चला सकते थे. यूरोप नहीं चला पाए, हर 10 साल में कोलैप्स होता है. अगर कहीं पे दादागिरी न करे, अफ्रीका ना हो तो यूरोप तो भीख पे आ जाएगा, भिखारी पे आ जाएगा. अभी तो वो लोग अफ्रीका में राजा बन के जाते हैं हर जगह चोरी करने के लिए, लेकिन चोरी भी करते हैं, सीनाजोरी भी करते हैं. लाइक टाई पहन के जाएंगे चोरी करने के लिए. काम चोरी का ही है, चाहे आप शराब का गिलास पकड़ के करो या फिर आप गंदे कपड़ों में करो, चोरी काम तो चोरी का ही है. और इतिहास तो गवाह है कि सारे चोर अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, ये इतिहास है ना. तो लेकिन तो अफ्रीका के ऊपर तो जो अपना कॉन्टिनेंट मैनेज नहीं कर पाए, यहाँ पे क्या मैनेज करेंगे, तो वही मानसिकता है ब्रिटेन की. तो मेरे को तो इसका फ्यूचर इतना ही दिखता है कि फ्यूचर में इंडिया 20-30 साल में ऐसे, आज एक रिपोर्ट भी आ गई है कि 2080 तक इंडिया विल बी नंबर 1 इकोनॉमी, 30% बिगर देन अमेरिकन इकोनॉमी, ऐसा बोल दिया उन्होंने. और चाइनीज इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, उनकी पॉपुलेशन भी श्रिंक हो रही है, और वो सब तो फैक्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे. मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा आपसे, ये जो मिडिल ईस्ट का वॉर चल रहा है, तो डू यू थिंक व्हाट इज द एंड गेम? क्या लोगों को भिड़वाना गेम है, या फिर क्योंकि कहीं भी किसी भी लड़ाई में हार के आए ये लोग. यूक्रेन में इनका अलाई बना, यूक्रेन हार गया. ईरान अलाई था, ईरान को बम्बार्डमेंट करा दिया इराक से. और तो ये और यहाँ तक कि हुथी रेबल्स इंडियन नेवी शिप पे अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन नेवी शिप पे खुल के कर रहे हैं. क्या उनको पूरा आश्वासन है ये लोग कुछ करने वाले नहीं है, या इनके पास बचा नहीं है करने के लिए, या टोटल कंफ्यूजन है? आई डोंट अंडरस्टैंड. तो मिडिल ईस्ट का गेम क्या है, इस पर थोड़ा सा लाइट डालिए प्लीज. ये काफी टफ क्वेश्चन है, राइट, बिकॉज वहां को समझ नहीं आ रहा. मेरे हिसाब से आई थिंक, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था कि जब ओबामा के ईयर्स खत्म हुए और ट्रम्प की प्रेसिडेंसी शुरू हुई, तो उस समय क्या हुआ कि पहली बार 1400 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अरब्स ने एक काउंसिलर बनाया इजराइल में, और इजराइल ने काउंसिलर बनाया अरब कंट्रीज में.
First time in 1400 years this has happened. Otherwise they both were sworn enemies. In fact, अगर आपके पास एक स्टैम्प भी होता था कि आप वहां विजिट करके आए हैं इसराइल में, तो आपको अंदर घुसने नहीं देते थे अरब कंट्रीज. तो इतना बड़ा चेंज आ गया. Not because Trump had done something, but because Trump had not done anything. Because he made sure that the intelligence agencies were always on the dock, uh, and they were never allowed to intervene in all these areas at all. So that is why the countries individually could work and create the kind of uh, engagement that they needed to do all these things. So जब बाइडेन आया और जब वो आ रहा था, जब वो पूरी अपनी कैंपेन कर रहा था, मुझे याद है अच्छे से कि वो he used to talk about के why he would, like, I think he's like, I don't remember the exact words, but like it was very aggressive towards Saudi Arabia. के he would, like, put them in place for doing what they did to that Khashoggi. कि वो खशोगी के साथ उन्होंने क्या किया, उसको सबक सिखाने के लिए वो कुछ करेगा. In fact, like when he had to go to Saudi Arabia to ask for them to reduce the oil price, he was again talking about Khashoggi and human rights. मतलब मैं ये सोच रहा इसकी मत मारी गई है कि तू बात करने, तू उनसे फेवर मांगने जा रहा है और तू उनको एक्यूज करके उनसे फेवर मांगेगा. Because it almost seemed like he thought that he was still in Obama era. The world had changed dramatically during the Trump era in Middle East. Middle East had completely changed during the Trump era. So Saudi Arabia is suddenly thinking very differently, working very differently, and at least its leadership, I would say, is like working very differently. In fact, मैं अपने फेसबुक पे कई बार बोला कि I won't be surprised if after 25 years we suddenly come to know that the leadership has converted out of Islam. Like, I won't say that it will convert to Hinduism, but I would say it has converted out of Islam. And so that is the kind of significant change that has happened in Saudi Arabia and UAE. Qatar mein nahi hua, because and that is why Qatar, I think, and Saudi Arabia and UAE don't almost like always see eye to eye. But ye hai leadership. But their entire country itself may not always be on the same page, especially the conservative, the mullahs and all those people, because they will realize कि भैया ये कुछ और ही हो रहा है यहाँ पर. So their entire livelihood, their entire future and control will go away of the world. So, and the rest of the Islamic world, if they realize that Saudi Arabia is changing, then उनकी तो पेटेंट ही चला गया, क्योंकि वो अगर सपोज करो कल को सऊदी अरेबिया अगर सेकुलर हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द इस्लामिक नेशंस हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज उनका तो मक्का मदीना वहां पर है. वो अगर मक्का में सबको आने देते हैं, अब सपोज वो कहते हैं कि भाई कोई भी आ सकता है, ये सिर्फ मुस्लिम नहीं आ सकते, कोई भी आ जाएगा, that will be a major change for the rest of the Islamic countries. And agar aisa, so they must be forcing that, like, some things are changing. So that is why they would, the underlying, जो नीचे वाला तबका होता है, वो that would start like working their gears, right? So मैं जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि और जिस तरह से like it is the right step in like some ways, इजराइल ने कहा उसकी कंडीशंस ये हैं कि जब तक हमास पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, जब तक सारे के सारे जो पैलेस्टीनियंस हैं वो जिहाद को नहीं छोड़ते, और जब तक उनको इजराइल को पूरा कंट्रोल नहीं होता गाजा पे, वो रुकने वाले नहीं हैं. And that would mean that they are going to keep on bombing that place for a long time. So
इसका एक एक बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट हर जगह पे हो रहा है. Whether we like it or we don't like it, most of the Muslims, in fact, I would say almost 100% of the Muslims that I have seen, whether they are in Europe or US or anywhere else, they are turning very negative. हमने अभी पीछे like you know वो उस्मान ख्वाजा का जो वो क्रिकेट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, उसका भी वो बूट के ऊपर जो उसने मैसेज लिखा था वो गाजा के लिए, वो भी हमने देखा. People are going to become more radical. And I'm not saying like that is the reason why Israel should not do what it needs to do for its own security. Like what I'm saying is there will be consequences, and the consequences will be that all the change that was brought on during the Trump era, that will be very much destroyed. Already destroyed. It's gone now. Correct. Oh. And जो भी कुछ बचा सकेगा सऊदी अरेबिया और इजराइल, अगर पीछे से बात करके भी, उसको भी इनफैक्ट मेरे को ये शक है अभी कि आगे आने वाले दिनों में सऊदी अरेबिया की लीडरशिप को खतरा है, अगर वो उस रास्ते चल रही है जो हम सोच रहे हैं कि वो चल रही है. बिकॉज जस्ट लाइक एंड वो हो रहा है बिकॉज यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर अलाइनिंग टुवर्ड्स Russia and India, and they are trying to change their entire game, and they are trying to be independent of like US. The more it does that, the more US establishment and its जो भी यहाँ military industrial complex है, they will try to go in and do some radical things. And that is like what I'm most concerned about वहां के बारे में. तो इसलिए मेरे नजर में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, this will become even more pronounced. आप इमेजिन करो, so just imagine that Egypt, and like Egypt already had like tried to be ready for a war, like right after the Hamas attack. Egypt, Jordan, Lebanon, and like some of the other countries, Syria, all these countries together, Qatar, Turkey, they all come together and together start attacking Israel. What will happen? Will US be able to save it? Will Israel itself be able to save itself? I don't know. So that could also be a possibility, like where they are going. And अगर वो ऐसा कुछ हो जाता है, like it'll be devastating. And this is not, I'm not talking about something which is unimaginable. I think given the kind of radicalism and given the kind of calls that are coming from most of the Islamic groups and societies, that may be the only option left for like many of the Islamic countries' leadership. आप वो इमेजिन करो वो सिनेरियो कि सिर्फ इजराइल है और बाकी सारी कंट्रीज विद ऑल द न्यू वेपन्स एंड वेपनरी आर रेडी टू अटैक इजराइल. वो यूएस बचाने नहीं आएगा उस समय. नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि 28,000 किलो के बम गिराने के बाद, अभी तो बढ़ के शायद 35,000 40,000 हो गए होंगे, 30,000 40,000 हो गए होंगे, उसको गिराने के बाद भी हमास खत्म नहीं हुआ. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. इतना भारी बम्बार्डमेंट जहाँ पे टाउन पूरा का पूरा रेज हो चुका है, ग्राउंड पे है पूरा, और उसके बाद भी कुछ अचीव नहीं हुआ. एक तो ये बात है. अच्छा, मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ. क्या ऐसा आपको लगता है कि विवेक रामास्वामी को अंत में जाके इंडिपेंडेंट के जैसे प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन में आना पड़ेगा? क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम तो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा ठीक से. विवेक रामास्वामी से पहले मुझे लगता है कि ट्रम्प शायद अपना एक वो इंडिपेंडेंट पार्टी से लड़ लेगा, कोशिश करेगा लड़ने की, क्योंकि like he'll have no other option, क्योंकि he knows के जो रिपब्लिकन जो वो पार्टी है वो तो वैसे ही उसको sabotage कर ही रही है खुद ही. तो he might have no other option but to actually go solo, and like if he tries to do that, the only ally he'll have is Vivek Ramaswamy. ऑलरेडी बोल दिया आई लाइक हिम, ऐसे बोल दिया उसने.
और कोई है भी नहीं जो उसका साथ दे रहा हो उस समय। नहीं, वो एकमात्र ही बचा है जो साथ दे रहा है। एंड और और एनीवे अपने अपने हिंदू अमेरिकन तो साथ दे ही रहे हैं ट्रम्प का, बहुत सारे लोग एक्टिव भी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ इंडियन अमेरिकन स्टिल विद द डेमोक्रेट्स। और एक्चुअली भारतीयों को समझ में आता नहीं है डेमोक्रेट्स है क्या चीज है। आई डोंट थिंक सो दे अंडरस्टैंड इट। वो यूनिटरी पार्टी सिस्टम है, चाहे ना डेमोक्रेट है ना रिपब्लिकन, सब साथ में ही है। वन लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सरप्राइजिंग होगा आपके लिए। आपने लास्ट शोज में भी बोला था प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी के लिए, और बोला था कि ये लोग कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं। एंड इतना इन्वेस्टमेंट, अभी इंडिया इज द ओनली कंट्री लेफ्ट विच कैन बाय थिंग्स टुडेज इकोनॉमी, लार्ज कंट्री, लार्ज टिकट आइटम्स। क्या कोई ऐसे सबोटाज करने की लोग कोशिश कर सकते हैं? इधर डेस्परेशन होगा इनका? हाँ, क्योंकि सी द थिंग इज के वो जो कैपेबिलिटी है वो तो नहीं जाएगी। यू नो द इकोनॉमी कैन ग्रो इवन इफ लाइक इट इज कंट्रोल्ड एंड इट इज करप्शन की लीकेजेस हो रही हैं, वो सब हो रहा है, वो सब होता रहेगा। इट मे नॉट ग्रो द वे यू नो लाइक मोदी गवर्नमेंट कैन ग्रो इट, बट इट इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमी। सो अगर कोई और आता है with this kind of a significant economy, because the place where the Modi has taken it, it will take quite some time to actually dismantle like everything. They won't dismantle everything, but they will dismantle a lot of things. So isliye the you know like I was saying, the only two countries now which can kind of throw the spanner in the works for all of these people is actually Russia and India, and they both are friends. And ये जो visit थी Dr. जयशंकर की, that even accentuates that even more. So तो मेरी नजर में I really feel के you know like there is a very serious security threat in India. And you know मैं I think हम ये बात पहले भी की है कि मोदी जी भी I think he has something up his sleeve, because मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक कि जब पुलवामा और उरी के बाद इतने तगड़े उन्होंने एक्शन लिए, अभी इतने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, इसके बाद उन्होंने कोई एक्शन लिया क्यों नहीं? बिकॉज एक्शन लेना इस समय वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग फॉर हिज अपकमिंग इलेक्शंस, राइट? बिकॉज वो एक्शन तो शर्तिया सक्सीड होता, मतलब like we have seen what that unnamed assailants have been doing in Pakistan, and that has boosted his image even more. But ये action अगर लिया जाता after the terrorist attacks, that would have really put the stamp, मतलब बस भाई बहुत हो गया, he is this thing. उन्होंने एक्शन लिया क्यों नहीं अभी तक? मैं इस बात पे हैरान हूं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि you know, he is not going for smaller actions, he's going for a much bigger action. So he's he is taking his time to do what he really needs to do. So अब मैं ये तो नहीं कह सकता वो क्या होगा, पर ये जरूर वो like मेरे दिमाग में है कि वो like it will be really substantial, it will be game changing. एक्शन तो लिया हो सकता है, बताया भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वो भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने बताया था, इंडिया ने नहीं बताया था। हाँ, बट द पॉइंट इज कि फिर भी उन्होंने डंका तो बजाया था। मेरे को ये है कि बाद में पाकिस्तान के राइट, लाइक इस समय, मतलब जब उन्होंने कहा कि हमने एक वो सर्जिकल स्ट्राइक की है या हमने वहां अटैक किया, पॉइंट इज कि उसका तो फायदा होगा इलेक्शंस में, और Modi is pretty savvy about his political this thing. Why won't he do that? Like he would like to actually like bring it up, but I feel के छोटा action to make sure that जो उनके जो हमारी आर्मी के जवान वगैरह हैं उनका वो डिमोरलाइज ना हो, उस तरह का एक्शन लिया होगा। बट वो एक्शन जिसके बारे में वो डंका बजा सके, वो एक्शन अभी तक उन्होंने लिया नहीं है। वो अच्छा,
तो वो मेरा सोचना है। तो इसलिए आई थिंक लाइक देयर इज गोइंग टू बी fight to the finish kind of thing from both the sides. जब इस्लामिक आतंकवाद टॉप लेवल पे था 17वीं शताब्दी में, लेट 17वीं शताब्दी में, 1673 1663, तब तुलसीदास जी ने भारत को बचाया, हिंदुओं को बचाया, भारत को बचाया। फिर उसके बाद जब इकोनॉमी पूरा डाउन था, जब 1992 से पहले, तब अगेन भगवान राम ने आके बचाया, बाबरी मस्जिद गई उस समय। अब 2023 में भगवान राम वापस आ रहे हैं, अभी वापस भगवान राम बचाने आ रहे हैं। तो मीन्स भगवान राम उस समय पे आ रहे हैं जब भारत बहुत ही मुश्किल से गुजरता है। तीनों बार ऐसे हुआ है। उस इस्लामिक आक्रमण था, फिर ये जब 90s में पीक था, जो आरक्षण और ये सब बकवास पूरा भारत में भरा हुआ, तब भगवान राम आए, अब भगवान राम आ रहे हैं। तो डू यू थिंक इट इज अ फोर बियरर ऑफ थिंग्स टू कम इन 2024 ऑनवर्ड्स? क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और लॉन्ग वॉर्स में हम लोग ही हमेशा जीते हैं। इट इज ए गिवन फैक्ट। मतलब अंग्रेज भी सब कोशिश करके चले गए, अब तो करी करी चावल खाते हैं लंदन में बैठकर भी, उनका प्राइम मिनिस्टर भी हिंदू है, और सब कुछ होने के बाद एंड में हम भी बचे हैं, है ना? ये सब लोग खत्म हो गए अभी। तो क्या आपको ऐसा, व्हाट डू यू सी? See, the thing is कि जब औरंगजेब था, the significance of where we are and what is happening today is this. मतलब इससे हम जान सकते हैं कि जब औरंगजेब था उस समय दो बहुत बड़ी बीइंग्स थे हमारे पास. One was Shivaji and one was Guru Gobind Singh. Both were amazing warriors, spiritual masters in their own right. मतलब एक देवी के भक्त थे और एक महादेव के, शिव के भक्त थे. और despite the fact that both were together, they were not able to dislodge Aurangzeb completely, right? And they were not able to change, to undo a whole lot of things that Aurangzeb was doing. नहीं, बट 1707 में तो औरंगजेब मर गया था, 1707 में. हाँ, तो but गुरु गोबिंद सिंह बाद में आए. like उसमें गुरु गोविंद सिंह, सिख पंथ was there. हाँ, गुरु गोबिंद सिंह was not there. उसमें, क्योंकि वो गुरु तेग बहादुर को मरवाया था, और लाइक वो लाइक उनके जो वो थे, वो जो भी उन्होंने भेजे थे अपने लाइक आर्मी के जो थे लोग, उन्होंने इनके बेटों को और बाकियों को मारा, और वो शिवाजी की तो लड़ाई थी ही थी. एंड लाइक आई बिलीव दैट देयर वाज दिस very brief time when I think Guru Gobind Singh Ji or Shivaji, one of them, they actually tried to meet the other person, but they were not successful to meet each other. Now, at this time, this is for the first time in many centuries that something which had been done to the soul of our civilization is being reversed. For the first time, the forces that represented what Aurangzeb used to do, those forces are being dismantled in the Indian subcontinent. पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है और बांग्लादेश के साथ जो हो सकता है आगे, खासतौर पर पाकिस्तान के साथ, that will be a big change going forward. And like मेरी नजर में ऐसा हुआ नहीं है पहले. तो उस तरह से मैं देखता हूं कि this moment of time in India is very very significant. और जैसे आपने कहा भगवान राम का, like मेरी नजर में हमारे the Greek civilization खत्म हुई because they were not practicing experiential spirituality all the time. So उनके masters कोई enlightened being, enlightened masters नहीं थे. हमारे यहाँ आते रहे हैं और उन्होंने
बहुत काम किया है, यू नो, लाइक मैं उस दिन सोच रहा था, सो आई डोंट नो मेनी पीपल लाइक डू नॉट नो, बट फॉर दिस बुक दैट आई एम राइटिंग आई वाज डूइंग रिसर्च, और मेरे को ये मैंने पहले भी लिखा है अपने ब्लॉग में कि at the end of, like in the beginning of the the 20th century and the end of the 19th century, उस समय एक बहुत बड़े पोएट थे भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के, उनके एक और साथी भी थे, उनका नाम था शारदा राम फिलौरी। पता नहीं आदित्य जी आपने शारदा राम जी के बारे में कभी सुना है कि नहीं सुना, उनका नाम आप जानते हो कि नहीं जानते, पर मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि उनकी रचना जो है उसको सब जानते हैं, और उन्होंने ओम जय जगदीश हरे आरती लिखी थी। अब ओम जय जगदीश हरे जो आरती जो शारदा राम जी ने लिखी थी, वो उसने ये लिखी गई थी अर्ली 1900s में। आप ये सोचो कि कितने होंगे, मुश्किल से 50 साल, हर मंदिर में, हर घर में इसने हमें जोड़ दिया। वो एक तरह का एक वो दैव्य एक मतलब चमत्कार ही कह सकता हूं, ऐसा होता है, क्योंकि ऐसी राइटिंग, ऐसी रचना जो सारे ग्रुप को एक साथ जोड़ दे और बिना किसी मार्केटिंग के, बिना किसी पुश के, वो बहुत रेयर कभी होता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जिसकी वजह से जो चेंज होता गया ऐसे पॉइंट पे आया कि बाबरी मस्जिद गई, और उसके बाद एक चेंज आया, पूरी पॉलिटी में चेंज आया, एंड वो पॉलिटी इस तरफ गई कि बाद में बीजेपी एक्चुअली जीती, एंड बीजेपी बिकेम द मेन स्ट्रीम पार्टी, एंड देन like later on we got a person who was so strong, who could actually undo a lot of things that had not been undone in like since maybe like 1100s. That itself shows ke we are moving towards a point where like it will actually start coming back up. So Ram ji ka वापस आना like will be very 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 significant, because वो जो अमर जो बीइंग्स हैं उनमें हनुमान जी भी एक हैं। तो हनुमान जी तो रहेंगे वहां पे, विभीषण भी रहेंगे, बहुत सारे लोग रहने वाले हैं। तो भाई लोग पहुंच जाना और कैमरे को ढूंढना कहाँ पे विभीषण है, कहाँ हनुमान है, कहीं ना कहीं तो रहेंगे। और मैं तो एक्चुअली आई एम नॉट वेरी हैप्पी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और चीफ मिनिस्टर के साथ एटलीस्ट श्री संप्रदाय के लीडर्स होने चाहिए थे, और ब्रह्म मध्य संप्रदाय के लीडर्स होने चाहिए थे, मैं चाहता शंकराचार्य होने चाहिए थे। ये सब लीडर्स हमारे राष्ट्रीय धरोहर हैं, जो हमारे जो एक्चुअल स्पिरिचुअल गुरुज हैं, संप्रदाय के लीडर्स हैं, वो होने चाहिए थे। उनकी जगह मोहन भागवत को भेज दिए। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, आई डोंट एग्री ऑल्सो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर यस, गवर्नर यस, लेकिन बाकी तो हमारे संप्रदाय गुरु होने चाहिए थे सारे। रामभद्राचार्य जी होने चाहिए थे, जो बड़े बड़े हमारे संत हैं वो सब होने चाहिए थे अंदर, जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के समय में भगवान राम तो संतों के लिए आते हैं, संत नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो ये मैं देखना चाहता हूँ, मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन, गलत जजमेंट भी नहीं देना चाहता हूँ। सो प्लीज फॉरगिव मी अगर मैं कहीं पे स्टेप हूँ, लेकिन संप्रदाय के गुरु तो होने चाहिए। मुझे चिन्नजीयर स्वामी होने चाहिए, और जो हमारे जो रामानुजाचार्य, रामानंदी, पुष्टि संप्रदाय, इनके लीडर्स होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय धरोहर है ये सब लोग। और मेरा तो इनमें सब में अटूट विश्वास है, ऐसा नहीं कि एक में हो, सब में है, क्योंकि ये सभी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक आदि शंकराचार्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मध्वाचार्य को, एक रामानुजाचार्य को। अगर इन लोगों के बिना कोई परंपरा कहाँ पे रह सकती है, और निम्बार्काचार्य संप्रदाय, इन सबको होना भी जरूरी है। सो एनीवे विद दैट, थैंक यू देश जी फॉर कमिंग ऑन द शो। और थोड़ा डिटेल में हम लोग गए, काफी लंबा शो हो गया, लेकिन समटाइम्स 2 मिनट्स नूडल्स से नहीं समझा सकते हैं ये सब चीजें। वी गेट इनटू द एक्चुअल निटी-ग्रिटी ऑफ द थिंग्स। और हम लोगों ने पूरा वैश्विक पे कवर किया 2023 तक। 2024 में किसने देखा है पता नहीं है। राम नाम का जप करो, हरि राम करो, अच्छी तरह खुश रहो। जनवरी 22 को भगवान राम आने वाले हैं। सत्तोलॉजी पे प्रोग्राम्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं।
So thank you all very much, and thank you for coming on the show. Namaste. Thank you. Namaste. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram.